लेकिन फौज की अकाउंटेबिलिटी है और वो अकाउंटेबिलिटी न सिर्फ हमने यहाँ देखी, हमने 9th May में भी देखी। उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ जो वीकनेसेस हैं हमें उसको एड्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। So I gave it a shot, and actually I stood out in that pilot test, which was back then for that news agency, and they've chosen me to work. So it was an accidental. It was indeed an accident. मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इस वाक़े की तहकीकात अभी हो रही है। और उसको मीडिया में जिस तरह कहा गया, लेकिन मैंने ये कहा था कि उस वाक़े की हम तहकीकात करें। इससे पहले बलूचिस्तान में जितने वाक़यात हुए हैं, बड़े वाक़यात हुए हैं जिसमें बड़ी किलिंग्स हुई हैं, मैस किलिंग्स हुई हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें तमाम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो रॉ की है। इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यकीनन आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके फैसिलिटेटर कौन थे, इसके सिंपैथाइजर कौन थे और ये कहाँ से टारगेट सेलेक्ट किया गया, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर मैं मस्तूम के हवाले से या टेररिज्म के हवाले से बताता चलूँ कि देखिए, हमारे यहाँ इम्पीचमेंट की जो पॉलिसी है उसने पाकिस्तान को स्टेट को हमेशा नुकसान पहुँचाया है। ये वायलेंस का जो राइट है, वायलेंस की जो मोनोपोली है वो स्टेट के पास रहेगी। वो वायलेंस की मोनोपोली जो है वो किसी और को एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाएगा, वो चाहे किसी किस्म का वायलेंस हो। वो वायलेंस के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी है। हमने ये जंग दहशतगर्दी की हमारे फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानी देकर बड़ी जवामर्दी के साथ लड़ी है। और अब भी मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारा दुश्मन है, जो टेररिस्ट है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। सिर्फ क्या है कि हमारे यहाँ इस लड़ाई को कौमी लड़ाई समझ के लड़ा नहीं जाता। हमारे यहाँ डिवाइड है सोसाइटी में इस लड़ाई को लेके, वो डिवाइड खत्म करना है और उसमें सबसे बड़ा रोल आपका है कि ये जो एथनिक बुनियादों पर वायलेंस है, तो मजहब के नाम पर जिसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, इस बुनियाद पर वायलेंस है। वायलेंस जो है वो किसी भी बुनियाद पर है, वो सिर्फ स्टेट ने एक्सरसाइज करनी है, किसी और ने एक्सरसाइज नहीं करनी। और ये हमारा कंसेंसस है, इस पर जीरो टॉलरेंस है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि इंशाल्लाह ताला इसमें आपको वाज़े कमी नजर आएगी। देखिए, जब हम एफर्ट करते हैं ना, तो वो फिर उस एफर्ट के नतीजे में भी वो ज्यादा से ज्यादा हम पर अटैक करने लगते हैं। जब वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो समझते हैं कि हम ये धमाके करके, हम मासूम लोगों का कत्लो गारत करके स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बैकफुट पे ले जाएंगे। ये उनकी गलत फहमी है। हम बैकफुट पे जाने वाले नहीं हैं, हम फ्रंट फुट पे आएंगे। वी विल फाइट विद यू, और हम इस रिजॉल्व के साथ फाइट करेंगे कि एक भी दहशतगर्द इस मुल्क में नहीं होगा और इस मुल्क में हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी से हम जिएंगे। बंदूक के जोर पे अगर अपना कोई एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है तो वो मुसल्लत करने नहीं देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करेगा, कोई और चीज प्रिवेल नहीं करेगी। What challenges as a journalist you faced, and now as you're running a group as well? So what are overall the challenges of South Asia, Middle East, and the rest of the world as you have experiences all over? Well, I think the main challenge is that this region and where I work is not media friendly. देखिए, ये एक सिनर्जी के साथ एक when I say media friendly, I'm not talking about the people, I'm talking इसको about पीनट the कहें, institution चले हम इसको पीनट in general. एटलीस्ट पीनट तो Maybe है the ना। processes. कोई एक जो एक इस तरह का वो था, कम से कम स्टेट का ये रिजॉल्व या गवर्नमेंट का ये रिजॉल्व तो नजर आ रहा है कि हम इसको इनकरेज नहीं करेंगे। There are consequences sometimes, बल्कि किसी भी लेवल पे जाना पड़ा जाए। मेरे हिसाब से ये पीनट्स नहीं, और आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, not what you believe, what you see, अपनी राय कायम करने में just मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए I think this is the main एक ट्रॉफी है कि हम इतने working बड़े in एक ऐसी चीज के पीछे जा रहे on the other हैं hand, और एक सिनर्जी के साथ जा रहे हैं, हम लोग मिल के जा रहे हैं कि जो इस any मुल्क journalist, this is actually जीत करा रहा है। तो इसमें encouragement की privilege जरूरत and an advantage, I believe. So I want to touch a bit on when you were taken away by the. Was it a group from Philippines or they were? Yeah, it's a militant group called Abu Sayyaf group. Abu Sayyaf. Yeah. So how they got hold of you? How they took you away? Right. I think you were kept for like 18 months or so. That's long. For 18 months, indeed. Yeah. So what was the experience? Why they took you and how they kept you, and how you managed to escape from them? So it's a long story. It's 18-month story, and with someone who's been kept hostage for 18 months,
देखिए every minute, पहले जहाँ तक like आपने माजी की बात की, मैंने पहले आपसे कहा कि हम like उसमें a पढ़ना year or नहीं more. चाहते हैं, हमारा उससे कोई मेरे टाइम endless, का actually. अगर आपसे सवाल है तो मैं ज़रूर उसको जवाब दूंगा. a lot of things actually to talk about, but if माजी वाले ने I'll try अपनी to एफर्ट्स की होंगी, sum it कोई up एफर्ट by चल रही saying होगी, I went there for a शायद इससे भी documentary, ज़्यादा मैस क्रिएट and होगा. जहाँ तक रही बात इलेक्शन my सिक्योरिटी की, वो हमारी producer जिम्मेदारी है. जो supposed to सेंसिटिव पोलिंग arrange the स्टेशंस interview with होंगे Abu हमारे Saif. इलेक्शन कमीशन के साथ आज भी Apparently was सेक्रेटरी working दाखिला with ने them, मीटिंग and की, he told हम me उनके साथ और मीटिंग्स करेंगे. जहाँ So this is one of the हमारी lessons I always हमारी लॉयर say when प्रोफेशनल I वो उनसे रिक्वेस्ट teach की जाएगी journalists और that मुझे you need to यकीन है make कि वो sure पूरी you know who's your producer, who's your coordinator. So many kidnapping incidents happen because of this. Even if we go back to the story of Daniel Pearl in Karachi, in fact he was actually handed over to the Al-Qaeda because Omar Sheikh was नहीं, ये कोई पर्सनल मैसेज तो नहीं coordinating होता for है, Daniel लेकिन ये है कि Pearl बुनियादी his तौर पे जब interviews, स्टेट ऑफ and that's how पाकिस्तान actually he मेरी fell in the असेसमेंट hands of है, Al-Qaeda. स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फैसला My किया कि producer हार्डिंग was the स्टेट one है, who वो एक सॉफ्ट स्टेट नहीं sold है, out. तो रिएक्शन So I walked into और जब their हम उनके खिलाफ एक मुकम्मल कार्रवाई stronghold in करने the mountains of Sulu Island रिएक्शन जो है वो in अनएक्सपेक्टेड southern Philippines by वॉर myself. जोन में होते हैं. Once I reached there and I was preparing the camera setup with my और इस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा they रहती है. said you तो are उनके पास our hostage. सुसाइड बॉम्बिंग के अलावा और है क्या? They made no offer. I उनका ये myself जो एक went by चीज़ अंडरस्टैंड करने की myself to ज़रूरत है there. कि जो स्टेट है, what was the group you guys were working with? What media group was? So back then I was working with Al Arabiya News Channel. And the guy was on their payroll. तो वो No, जो so टाइम that की guy was अपॉर्चुनिटी है या उसकी अपॉर्चुनिटी है वो उनके पास A रहती local है. journalist, तो ये एक टेररिज्म की जंग है, and he was मुश्किल from लड़ाई that जरूर area, है, नामुमकिन नहीं है, हम ये and जंग he लड़ेंगे thought maybe और फ्रंट पे आके लड़ेंगे. from a foreign journalist we can get some. Yeah, he probably made a good. So it was a kidnapping for ransom, Okay. for money. And did your organization or your country pay the ransom, or So you my escaped? company was very much ready to pay the ransom. But even if you pay the ransom, that's going to, somehow it's being used against you at a later stage. How? But like if somebody has taken you and you pay them like $1 million, Right. so they're a terror group, they're going to use that $1 million. So here it against comes you. the equation: who's more important, precious, the life of people, or this thing? I certainly believe after going through this experience, the life of people are more precious. And if you want to deal with this, you need to deal with the roots of the problem. Why this militant group is actually still exists? Because in my case, I know this group was having connections with the local government there in that region, in that area. So they're kidnapping. They are not the only ones who take the share of ransom when it comes. There are so many people who would actually complete hierarchy. Beneficiaries are like, there is a chain of beneficiaries in और इस्लामाबाद की such a विसिनिटी में case. जितनी And everybody is getting paid out of that ransom. So I think to deal with the roots of the cause is better than to get who's, the egg or the chicken. So how did you manage to get out of their custody? How long did it took you? And how? Took me I think just for the people, if somebody gets kidnapped. Well, if someone gets kidnapped, and I don't wish it for anyone, because to be honest, आपको डिटेल और ये नया साहब के हवाले से nothing नया साहब के हवाले से आपने सवाल worse किया. than you नया feel that you are साहब not अगर आना free. चाहते हैं Nothing वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना And I चाहते have हैं, really ये learned encouraging है. और मेरी through उस this स्टेटमेंट को difficult भी मिस experience इंटरप्रेट that किया गया. मैं आज भी ये कह people's रहा हूँ जो freedom, मुस्लिम लीग के people's रहनुमाओं ने मेरे rights बारे में बात की, are something खास तौर पे great. Everyone should साहब मेरे respect बड़े it. भाई हैं, Violating people's rights, trying to violate people's उनको freedom, हक है जो भी कहे, मैं उस पर कमेंट their नहीं movement, their मैंने speech उस and प्रोग्राम में everything भी कोई is ऐसी बात a नहीं की crime. जिनसे उनकी दिल आज़ारी. No one has the right. कि मैं नवाज Has शरीफ been तो a वो लीडर हैं state, जो बेटी समेत खुद जेल जाने के लिए आ गए थे. a अगर group, उनको जेल जाने whoever, का खौफ होता तो वो individuals, बेटी they समेत have जब no उनका right to violate others' बदतरीन मुखालिफ इस others' वज़ीर आज़म तो उस वक्त भी आ freedom गए to थे. speak, कानून freedom जो है वो to कानून move, के मुताबिक and so on. किसी भी शहरी को It is कानून के something मुताबिक really, it is actually why we live for, our freedom. Our freedom is very important. निगरान वफाकी वज़ीर So, सरफराज अहमद बुगटी और मुर्तज़ा सोलंकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. उन्होंने During कहा these कि मुल्क 18 में months, I've स्मगलरों tried 3 और times हवाला to हुंडी escape. का कारोबार I've करने failed वालों के लिए twice. कोई जगह नहीं है. A lot गैर of कानूनी details काम in करने that. वालों के हवाले से In कोई the नरम third गोशा नहीं